Hello students, on your demand, today I am explaining the poem The Sea and the Skylark. Now The Sea and the Skylark is a sonnet, that is a poem of 14 lines. Now it was originally titled Walking by the Sea. In this sonnet, the sea and the skylark are described in the octave, the first 8 lines. These are contrasted with man in the sestet, that is the last 6 lines. The mood of the poet here is joyous in the octave, where he describes the natural sounds of the sea and the skylark singing. But with the very first line of the sestet, the mood changes to one of gloom and despondency. The remaining lines of the sestet are deeply pessimistic. The poet foresees the total decline and even dissolution of the human race. The poem ends with a deep sense of loss at the thought that man is losing his identity and destroying his pattern. The theme of this sonnet is a contrast between the life-giving purity of nature and the sordidness of the civilization that man is creating. The town mentioned in the poem is Rhyl in Wales, but the poem is not an attack particularly on that town or the Welsh people. It is a general meditation on nature and man, occasioned by a particular scene. Catherine Mackenzie points out that Hopkins explains to Robert Bridges what rash fresh meant. He wrote in a letter to Robert Bridges that rash fresh meant a headlong and exciting new snatch of singing, resumption by the lark of his song, and this goes on, the sonnet says, through all time, without ever losing its first freshness, being a thing both new and old. The skein, the lark song, which from his height gives the impression of something falling to the earth, as a skein of silk ribbed by having been tightly wound on a narrow card, unwinding from a reel or winch, the lark in wild glee races the reel round, dealing out and down the turns of the skein or coil right to the ground, where it is all wound off onto another winch, and so is ready for a fresh unwinding at the next flight. Now, this is the most beautiful explanation of rash fresh, and it comes straight out of Robert Bridges himself. That is, Hopkins explained it in a letter to Robert Bridges, the straight from the horse's mouth. Now, if we go about explaining the poem verbatim, the very first line, on ear and ear. Now the references to both the ears of the poet, this is not a happy use. Moreover, there is no need to mention both the ears. दोनों कान, कवि कह रहा है कि दोनों कानों पर, ear to ear. Now, there was no need to say from ear to ear, but he is talking about on ear and ear, two noises, too old to end. Two noises, दो आवाज़ें, too old to end. Now that is again a contradiction. Too old to end. Usually what we understand is anything that is old has to end. But here he is talking about two sounds which are too old to end. That means these are eternal sounds. Two noises which have been heard for so long a time that they may be regarded as everlasting. Two immemorial noises which will continue forever. यानी वो दो शोर जो अनंत काल से सुने जा रहे हैं और सुने जाते रहेंगे. Therefore they are too old to end. तो ये विरोधाभास था यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको यूज़ किया है कवि ने बहुत ही खूबसूरती से. और कौन सी वो दो आवाज़ें हैं? They make a very deep impression upon the poet's ears. कानों पर उसके बहुत प्रभाव डालते हैं. यहाँ पे ट्रेंच शब्द का जो प्रयोग है वो भी ड्रेंच और क्रंच ऐसे शब्दों का हमें याद दिलाता है जो भी लहरों से संबंधित शब्द हैं. सो राइट फ्रॉम द राइट हैंड, ट्रेंच right. From the right hand,
the tide that ramps against the shore. Now, he's talking about ramps against the shore. That means breaks against the seashore. Ramps again suggests words such as romp और rampage और ram. लहरें जो समुद्र के किनारे से टकराती हैं. A flood or a fall. Now the shore is flooded when the wave strikes against it, but then the wave retreats, leaving the shore drenched but not flooded till the next wave comes. लहरें जब आती हैं तो पानी तेज़ी से आता है, पर लहरों के जाने पर किनारा गीला हो जाता है, पानी तो चला जाता है, फिर लहरें आती हैं. ये क्रम चलता रहता है. इसीलिए बात हुई लो lull off और all roar. Mean there is a pause, lull off, after the wave strikes against the shore and then retreats. But when the next wave comes, there is all roar or a big noise. ये जब लहर आकर टकराती है या टकरा कर जाती है तो कुछ क्षण के लिए तो शांति हो जाती है, पर फिर लहर आती है और फिर तेज़ी से आती है तो फिर शोर होता है. फ्रीक्वेंटिंग देयर, तो सी वेव्स विल कंटिन्यू टू फ्रीक्वेंट और विजिट द शोर. फ्रीक्वेंट यानी बार बार, लगातार आना. समुद्र की लहरें इसी प्रकार आती जाती रहेंगी, ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा. वियर दैट मीन्स बिकम स्मॉलर इन साइज. वेव आकार में छोटा हो जाता है. वेंड ग्रो बिगर इन साइज, आकार में बड़ा हो जाता है. यानी लहर कभी घटती है कभी बढ़ती है. वाइल मून शेल वेयर एंड वेंड, जैसे कि चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के साथ साथ लहरें भी जो है वो घटती और बढ़ती रहती हैं. वेयर एंड वेंट, गेट टायर्ड एंड गो. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्किक यूज. प्राचीन भाषा का प्रयोग है ये. द टाइड्स इन ओशंस आर कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन विच मून एक्सरसाइजेज अपॉन देम. ज्वार भाटे की हम बातें करते हैं, हमने पढ़ा है यह है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के क्रम में ही लहरों का घटना बढ़ना चलता है. तभी हम कहते हैं टाइड में है, अभी ज्वार भाटा है, अभी नहीं है. एज लॉन्ग एज द मून लास्ट इन द स्काई द टाइड्स विल कंटिन्यू. तो ये भी नेवर एंडिंग है. जब तक चंद्रमा रहेगा उसका घटना बढ़ना जारी रहेगा. और उसी की वजह से लहरें जो हैं, क्योंकि वो चंद्रमा से आकर्षित होकर उठती हैं, अतः जब तक चंद्रमा रहेगा लहरें आती रहेंगी. तो ये अनंत दो साउंड्स हो गए. लेफ्ट here refers to the left ear. लेफ्ट साइड as contrasted with the right of line 2. पहले राइट की बात की थी, अब लेफ्ट की बात करें. ऑफ लैंड यानी अबव द अर्थ. इसका रेफरेंस आप ये देख लीजिए कि स्काईलार्क जो है धरती छोड़कर आसमान की ओर उड़ जाती है, यानी पृथ्वी से ऊपर आकाश में. यहाँ संदर्भ स्काईलार्क का है. असेंड यानी चढ़ना या फ्लाई अपवर्ड्स इनटू द स्काई, आकाश में ऊपर उड़ जाना. पार्क यहाँ स्काईलार्क है. रिफ्रेश्ड यानी पुनः ताजगी प्राप्त कर लेना. रिवाइंडेड फिर रिन्यूड, न्यू स्कीन्ड स्कोर. अभी मैंने आपसे बताया था कि मैकेंजी ने क्या कहा है री स्कीन्ड और उसके लिए रैश फ्रेश के लिए. वही चीज़ आप देखिए. द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क इज़ लाइक अ म्यूजिकल स्कोर which is compared to a new skein of wool. The poet means that the skylark song is like a skein of wool which is unwound as he climbs the sky to sing and rewound after he returns to the earth having finished his song. यानी स्काईलार्क का गाना जो है वो स्कीन के खुलने व बंद होने के समान है. स्कीन क्या? रेशम के धागे का एक डोरा. तो स्काईलार्क के ऊपर जाने और फिर पुनः वापस नीचे आने से वो प्रभावित होता है. और स्कोर के लिए क्या, स्कोर किसके लिए यूज़ किया है यहाँ पे? म्यूज़िक के लिए. म्यूज़िक को भी स्कोर कहते हैं. अ सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क. रैश फ्रेश हम पहली बार बात कर चुके, फिर बात कर लेते हैं. इट इज़ अनइनहिबिटेड, स्पॉन्टेनियसली रैप्चर ऑन स्पायर, बिना झिझक के, स्वयं स्फूर्ति ताजगी भर. रैश फ्रेश, न्यू स्कीन. हाइफनेटेड शब्द हैं, देख रहे हैं आप. रैश फ्रेश हाइफन आ रहा है बीच में. तो इन क्रिस्प्स ऑफ कर्ल्स ऑफ वाइल्ड विच wench. The skylark seems to whirl his musical score off the winch of his throat, not in a smooth and even flow, but as it were in crisp curls of melody.
Every note of the melody is compared to a lock of fleas waving in the air. स्काइलार्क का गाना जो है सीधी सरल आवाज़ में न होकर छल्लों के समान मोड़ लिए हुए निकलता है। गाने की तुलना भेड़ के गोल छल्लेदार ऊन से की गई है।